Good morning, ma'am. Yes, Beta, good morning. We'll start with a new chapter, Morphology of Flowering Plants. What chapter number is this? Chapter 5. Biomolecule. Very good, it is chapter 5. We have finished biomolecules, last topic, enzymes. It took us almost 3 days for enzymes. And now we are going to start with morphology of flowering plants. What do you mean by morphology? What is the difference between morphology and anatomy? Yes, Beta. Morphology and anatomy, very important words in biology. What do you mean by morphology and what is anatomy? Who will tell me? Try. You have to simply try, Beta. And And morphology is the external structure. Okay, very good. Very good, very good. And anatomy is when we study what? The internal structure. That is anatomy. So that means in this chapter, we are going to study external features or internal part of the flower? External part. External. Very good. So we are going to study about morphology. That means external forms of an organism. Morphology is study of external forms. We have done the difference between gymnosperms and angiosperms in class 10th also. We know their difference. Flowering plants are angiosperm. All angiosperms, they have a specific characteristic. All of them have roots, if you can see, roots, stems, leaves, flowers, and fruits. You must have done taproot and fibrous root system also in junior classes. So this is the main root. The main thick root is called as a primary root. And the side branches, side roots which come out, they are known as lateral roots. And these small hair-like structures on the root, you know, they are known as root hairs. So this is a simple chapter. 40%, 30% you already know about it. So these are the main parts of a flowering plant. See, we have roots, we have stem, we have leaves, we've got flowers not shown here, and of course fruits also. Let us discuss about this. This main root is your primary root. Side branch roots are called lateral roots. The hair on these are root hairs, and this is your stem. The point from where this branch arises or the leaf arises, both the definitions are correct. The point from where sometimes what happens is branch comes out, there is no leaf. Then also that point will be called as node. Or if a leaf comes out from that point, sticking to that point, then see if you see over here, if this is a node, leaf is coming out from here. This is also a node.
you have a branch and then the leaf is coming up. So the point on the stem where a leaf or a branch emerges is what we call as a node. The difference between two nodes, the distance or the difference between two nodes is called what? What is it called, beta? Tell me. Internode. Yes, it is called as internode. These are some simple terms. Anyways, we are just revising it. So we've done two types of roots. Yes. What are the two types of roots on your screen? Primary roots and lateral roots. Yes. Now, if you see over here, this axillary bud, the bud which grows at the axil is what we call as axillary bud. Now, what is this axil? See, this is the upper side of the leaf. Lamina also you sometimes call the flat part. So this upper side of the leaf, okay, and the stem here, you have an angle over here. This angle between the upper side of the leaf and this supporting stem, the stem that you have, this angle is called as axil. And the bud which grows on the axil is known as axillary bud. So we are done with primary roots, lateral roots, stem, nodes, internodes, axillary buds, and then we move on to this petiole. What is petiole, children? Petiole. If you see over here, देखो बेटा, this stalk-like structure. When we use the word stalk, we mean डंडी, छोटी सी डंडी, जो किसको कनेक्ट करती है? ध्यान से देखिए, लीफ को स्टेम के साथ. ये petiole है. दिस छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है, इसको हम petiole बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द petiole. एंड बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे जो बड ग्रो कर रही है, एपिक्स पे जो बड ग्रो कर, एपिक्स मीन्स द टॉप पार्ट, टर्मिनल, टर्मिनल जहाँ पे खत्म हो गया प्लांट, टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पे जो बड्स बिल्कुल ऊपर आती हैं ये टर्मिनल बड्स हैं, और जो साइड में एंगल्स पे ग्रो करती हैं ये एक्सिलरी बड्स हैं. एंगल को हम एक्सिल बोलते हैं. सो बिफोर आई गो फर्दर, प्लीज एवरीबॉडी, दिस इज योर मेन रूट, प्राइमरी रूट. साइड ब्रांचेस हो गए हमारे लेटरल रूट. इस पे जो हेयर्स हैं, दीज आर रूट हेयर्स. ये हमारा स्टेम हो गया बेटा. जिस पॉइंट से ब्रांच निकलती है या फिर लीफ निकलती है, सी दे हैव शोन टू थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये भी नोड है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली नोड नहीं है. यहाँ पे ये छोटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिर लीफ स्टार्ट होती है. क्या होता है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसे? Petiole. Very good. So this point is also node, this is also node. The difference between two nodes is called internode. ये जो एंगल है आपका लीफ एंड स्टेम के बीच में, ये एंगल बनता है, देखो ऐसे सीधे कर्सर, ये और ये. दिस एंगल इस, ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एक्सिल. एंड इस एंगल पे जो बड्स ग्रो करती हैं, दे आर एक्सिलरी बड्स. देन ये दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ ब्लेड को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज petiole. एपेक्स पे, टॉप पे जो बड है, दैट इज नोन एज द एपिकल बड. So we are going to start with the main parts of the flowering system, flowering plant. Sorry, we all the parts which are under the ground. ये देखिए line बना दिया हमने. Under the ground, this form the root system, and ये ऊपर वाला सारा is what we call shoot system. So this is नीचे, under the ground is root system, ऊपर वाला सारा shoot system. Let us study about the roots. It is the underground part formed from the radicle of the embryo. You know, दो चीजें निकलती हैं. नीचे को जो निकलता है वो रेडिकल होता है, जो ऊपर को निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सीड में देखा होगा, सीड जर्मिनेशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर नीचे आता है बेटा, एक ऊपर को ग्रो करता है. जो नीचे आता है वो रेडिकल होता है, जो ऊपर जाता है वो क्या होता है? व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी. टेल मी. प्लूम्यूल. व्हाट इज इट कॉल्ड? Yeah. यस. सो रूट्स तो इससे ग्रो करती हैं जो नीचे को ग्रो करता है, यानी कि रेडिकल. We have three types of root system: taproot system, fibrous root system, and adventitious root system. Let's have the taproot system here. एक बड़ा मेन रूट है बीच में, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, और ठीक है टैप रूट भी बोलते हैं इसको.
This is the main root which I had kept the cursor. ये जो मोटे वाला बीच का root है. This is the primary root or the tap root. इस side में जो branches निकलते हैं, I have just told you these are lateral roots. What are these roots called as? देखो ये. Lateral root. Yes. We sometimes also call them as secondary roots. अगर ये primary root है, तो इसमें से निकलने वाली root हो गई secondary root. सेकेंडरी रूट्स में से भी और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और छोटी ब्रांचेस निकल आती हैं, which are sometimes known as tertiary roots. You will find taproot system in dicots. Primary root is the elongated form of radical. ये देखिए, ये radical था हमारा ये. So ये radical ही thick हो जाता है. देखो ये वाला part, it becomes thick. And ये कौन सी root बना लेता है? ये बीच वाली, which we call as what root? This is what Taproot. Yes, taproot, very good. Primary root, ये side branches हो गए. Secondary root, इसमें से भी निकलने वाले छोटे branches, these are tertiary roots. Tertiary. You will find taproot system in monocots or dicots. Dicot. Yes, mustard plant is a good example of this. Okay, चलिए, come to fibrous root system. Primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. वो जो radical था हमारा, जो प्राइमरी रूट बनाता है, ये वाला जो रेडिकल था, ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है बेटा. ठीक, इसकी जगह पे बहुत सारी bunch of roots आ जाती हैं, cluster of roots. These, okay, such kind of a root system is known as fibrous root system, and you will find them in monocots. These roots originate from the base of the stem to form the fibrous root system. See, this is your stem. From the base of the stem, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेन रूट है, इसकी ब्रांचेस है, ऐसा कुछ नहीं है. बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकल आ गए. ये देखिए, bunch of roots. These are called as a fiber like thin roots है, बहुत thin. वो वैसा प्राइमरी रूट या टैप रूट जैसा कोई मोटा रूट नहीं है इसके अंदर. ऑल ऑफ देम आर फाइबर लाइक रूट्स, very thin structures. So this system is known as the fibrous root system. You will find it in monocots. Taproot system was found in dicots. ये special roots है, adventitious roots. Roots that arise from the parts other than the radical. In the beginning, I told you roots originate from radical, but sometimes what happens is roots even originate from parts which are not, which is not actually radical. बहुत पुराने ट्रीज देखे होंगे, कभी बैनियन ट्री की बात करते हैं, इसमें बैनियन ट्री जरूर देखा होगा. ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे आपने, ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले. इफ यू कैन सी, these roots are called banyan trees. Sorry, these roots are called adventitious roots, and you will find them in which trees? Banyan tree. Yes. ये monstera है, ये इसकी roots हैं, ये वाला. This is also an example of adventitious roots. Stem से grow कर रही है बेटा. देखो ये यहाँ पे भी देखिए bark है, bark से grow करते हैं. These roots are known as adventitious roots. Very different roots. These are actually modifications of the roots. So we have done 3 root systems very quickly. Dicots में taproot system था. एक main root है, primary root, then secondary root, and then tertiary roots. And radical से बनती है हमारी main root और हमेशा रहती है. Fibrous root में main root खत्म हो जाता है, taproot है ही नहीं है, bunch of roots बन जाते हैं, which are known as fibers. So this system is known as fibrous root system, and you will find it in monocots. This is a special adaptation in roots. Roots radical से नहीं बन रही है यहाँ पे, some other part of the plant. The examples are monstera and banyan tree, and these roots are known as adventitious roots. Let's study about this. Vishwansh. Okay, let's see, let him join. Let me see. So these are the regions of the root, बेटा. ध्यान से देखो. ये सबसे नीचे ये आपका ये रूट कैप, ये रूट्स है हमारे. ये तो सब पहचान लेंगे, ये रूट्स हैं. रूट हेयर्स. नीचे जो पार्ट है, दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन. रीजन ऑफ इलोंगेशन मीन्स यहाँ से ही लेंथ बढ़ेगा रूट्स का. एंड ये जो टिप है, दिस इज नोन एज रूट कैप. This is the region of meristematic activity. Meristematic tissues are present over here. You know these tissues divide throughout their life. They help in the growth. So meristematic tissues present हैं बच्चे यहाँ पे. Okay. So this is the root cap. फिर ये आ गया आपका region of which activity? Root cap से ऊपर चल रहे हैं. Region of
Meristematic activity. और ऊपर चलते हैं, दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जो पूरा ऊपर को जा रहे हैं बड़ा हो रहा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर ये आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन आ गया पूरा, एंड इधर रूट हेयर्स तो है इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। सो व्हेन वी गो फ्रॉम डाउन टू अप, दिस इज रूट कैप। रूट कैप के बाद व्हाट इज दिस? आई विल गिव यू अ मिनट, फिगर देखिए पहले एक बार बहुत अच्छे से, देन आई विल हाइड इट, एंड फ्रॉम लोअर टू हायर यू टेल मी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, फ्रॉम डाउन टू अप यू विल टेल मी। सबसे नीचे क्या है बेटा? Root cap. रूट कैप। आफ्टर दैट ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डॉट डॉट, ये वाले, व्हाट आर दीज? Region of meristematic activity. यस, फिर हम ये बड़ा लंबा वाला पार्ट है रीजन ऑफ, elongation. Elongation. एंड देन वी हैव विच रीजन? Maturation. Yes, region of maturation, and there we have root hairs which are present over here. Let's talk individually about each part. Let's start from the root cap only. Covering है ये basically. Actually बहुत soft होता है जो end है, तो उसके ऊपर एक kind of cover दे दिया है as a protection. So this is the covering at the apex. It protects the tender apex of the root. Tender means very soft. ये जो part है बहुत ही soft है, lower वाला part, जो apex part है. So we generally have a covering on this cap की तरह. So that is why this is known as the root cap. Now come to this area, region of meristematic activity. You have already seen the position. It is seen just above the root cap. यहाँ जो cells हैं बेटा ध्यान से देखो, cells are very small. They have thin walls and they have a lot of cytoplasm. So सारी अच्छी characteristics हैं कि ये divide कर सके. You know meristematic cells, they keep dividing throughout their life. Difference between meristematic and permanent tissues. Class 9th में थोड़ा अगर याद हो. So these are very small cells. They have thin walls and they have rich amount of cytoplasm. So all these properties के कारण they can divide repeatedly. They keep on dividing the meristematic cells. बहुत activity रहता है इस area में because cells continuously divide करते रहते हैं. So that is why इस region को हम कौन सी activity का region बोल देंगे? This area is known as region of Meristematic activity. yes. Now come to this area. This region of elongation is just above the region of the meristematic region. Cells undergo rapid elongation and enlargement. यहाँ पे cell division नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे elongation हो रहा है. Cells में enlargement and elongation, cell का size बढ़ रहा है, cell की length बढ़ रही है. So that is why क्योंकि लंबे हो रहे हैं cells, length में बढ़ रहे हैं, so we call this region as region of elongation. This helps in the growth of the roots and length. Roots की length कौन बढ़ा रहा है? ये वाला area, region of elongation. Is it okay? यहाँ पे cell division होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो cells है उनकी growth होती है, elongation and enlarge, length and width दोनों बढ़ रहा है cell का, because of which roots grow कर रहे हैं. सबसे ऊपर this region is known as region of maturation. This is just next to the elongation zone, very close to, इसके बिल्कुल ऊपर आ गया ये zone हमारा, region of maturation. Here the cells differentiate and mature. Differentiation, again we've done in class 9th. Cells take up a specific shape and a specific function. अगर आप वैसे देखो बेटा तो सेल डिवीजन से यहाँ तो सेल्स बने, ठीक है, यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ हुई, अब वो यहाँ आते आते मैच्योर हो गए, तो वो अपना फंक्शन ले लेंगे और एक स्पेसिफिक शेप ले लेंगे, यानी इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद रखने के लिए. दिस इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एरिया, मतलब यहाँ पे सेल डिविजन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्स का साइज बढ़ रहा है, लेंथ विड्थ सब कुछ बढ़ रहा है. अब सेल्स मैच्योर हो गए हैं यहाँ पे, सो सेल ऑफ मैच्योरेशन एरिया है, मैच्योर सेल्स हैं. नाउ दे विल डिफरेंशिएट, they will take up a specific shape and a specific function. So can we have it again over here? Root cap, it protects the tender part of the apex of the root. Meristematic activity area में cells की कुछ characteristics हमने पढ़ी थी. Cells are very small, they have thin walls, and what was the third thing? Tell me. 3 characteristics we did of these cells. Dense cytoplasm. Dense cytoplasm. Very good. They have dense cytoplasm, so it makes it very suitable for cell division. So यहाँ पे cell division होता रहता है, बहुत सारे cells produce हो गए. अब now this is the area of elongation.
सेल्स का ग्रोथ होगा, लेंथ में विथ में सेल्स इलोंगेट कर जाएंगे, रूट की लेंथ बढ़ा दी इन्होंने बिकॉज सेल्स इलोंगेट हो गए. अब lot of cells are produced, cells have grown up also, so ये maturation area है. After becoming mature, like you decide which field you have to go. Similarly, these cells also, after becoming mature, they decide what shape they have to take, what function they will perform. This is what we call as differentiation. So cells have become mature and they have become differentiated. Root hairs, see these structures. Very fine, delicate thread-like structures formed from the epidermal cells in the region behind the region of elongation. This was the region of elongation. रीजन ऑफ elongation के इधर पीछे देखिए बेटा, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. दे आर फॉर्म फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस आउटर लेयर, ओके, एपिडर्मल लेयर. एपिडर्मल सेल से ही ग्रो करते हैं ये. इनका फंक्शन क्या है? दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. सो टू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर अबाउट रूट हेयर्स. नंबर वन, दे आर फाउंड इन विच एरिया? जस्ट नेक्स्ट टू द रीजन ऑफ elongation, इसके पीछे. सेकेंड बेटा, ये कौन सी लेयर से बनते हैं? फ्रॉम विच सेल्स? Epidermal cell. Yes, and they absorb water and minerals. These are the modifications. In some plants, roots are modified to perform other functions and absorption and conduction. Normally, we know the normal function of roots are this only. They absorb water and minerals and they conduct it. They pass it forward to the stem. But इसके अलावा we have exceptions also. देखो, ये वाला carrots में. These are swollen roots for food storage. Okay. Prop roots याद है क्या होते हैं prop roots? Chalo, let me explain it to you. Swollen roots for food. See these carrot, turnips. Sorry, this is sweet potato. Turnips. All of them are actually roots, but they store food. So एक modification ये हो गया, food storage. Second modification is जो बहुत पुराने trees होते हैं बेटा, उनका mass weight बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनको support करने के लिए ये जो hanging structures हैं हमारे, okay, what are these called? Prop roots. roots. Prop These roots are called, yes, banyan tree में देखिए होंगे. So दो modifications हो गए, food storage, support. Third is stilt roots. ये देखो, होती तो कुछ कुछ ये भी supporting roots ही हैं, but they come out of the lower nodes of the stem. जैसे stem है, okay, stem के lower nodes में अगर आप देखोगे, lower nodes में, ठीक, नीचे ऊपर नहीं होंगे ये, lower nodes में से ये roots निकल आते हैं, ये वाले. These roots are known as which roots? Stilt roots. शुगर केन में भी देखे होंगे आपने, ये लोअर नोड्स में से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला लोअर वाला, इसमें से रूट्स निकल आ रहे हैं. बाहर देखो, सॉइल के बाहर है ये. मेज एंड शुगर केन, स्टिल्ट रूट्स, दे आर आल्सो सपोर्टिंग. न्यूमैटोफोर्स इज द लास्ट मॉडिफिकेशन. द रूट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. नॉर्मली रूट्स बेटा ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ठीक है. यहाँ पे रूट्स से कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स. और बिल्कुल जैसे स्टेम ग्रो करती है ना, बिल्कुल ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. रूट्स हैं बट सॉइल से बाहर आ गए, बिकॉज दे गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन लाइक दिस. नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है? मैनग्रोव फॉरेस्ट, विच फॉरेस्ट? ज्योग्राफी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन. हैव यू हर्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट? कभी नाम सुना है बेटा मैनग्रोव फॉरेस्ट का? श्योर. अब देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम जो आया है, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड मैनग्रोव. कोस्टल एरियाज में होते हैं ये. मैनग्रोव्स क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे श्रब्स होते हैं, बहुत सारी, इनको हम मैनग्रोव ट्रीज बोलते हैं. इनकी एक पहचान होती है बच्चे, ये वहीं ग्रो करते हैं जहाँ लो ऑक्सीजन होता है. इज इट ओके? दे ग्रो इन एरियाज वेयर वी हैव व्हाट? लो ऑक्सीजन. सॉइल में ऑक्सीजन कम है बेटा, तो ऑब्वियसली इसके कारण इनको क्या करना पड़ता है? दे कम आउट. कोस्टल एरियाज में मिलेगा ये सब चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी? विच एरियाज? Coastal areas. वेरी गुड, कोस्टल एरियाज बेटा. ये मेनली क्या होता है, ट्वाइस अ डे हाई टाइड्स आते हैं कोस्टल एरियाज में, और ये पूरा का पूरा वाटर जो है एटलीस्ट दिन में 2 बार राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स के कारण आप ये सोच लो कि पूरे फ्लडेड हो जाते हैं.
ये पूरा एरिया ट्वाइस अ डे में क्या हो जाता है, फ्लडेड हो जाता है। कैसे फ्लडेड हो जाता है, जब हाई टाइड आता है, बिकॉज आई टोल्ड यू ये कोस्टल एरियाज में होते हैं बेटा। तो ये रूट्स क्या करते हैं, एक तो जो स्पीड है पानी की, मूवमेंट ऑफ टाइडल वाटर्स, उसको स्लो कर देते हैं। एंड जो सेडिमेंट्स पानी के साथ आते हैं वो धीरे धीरे वहां सेटल होने लग जाते हैं, दे कीप सेटलिंग ऑन दैट एरिया। अब उन्हीं सेडिमेंट्स की हेल्प से ये वहां पे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे स्टॉप वाटर के स्टॉर्म्स को स्टॉप कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आसपास में जो सिटीज एंड टाउन्स हैं उतने ही स्पीड से पानी आ जाएगा। ये बेसिकली पानी की स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं जब ये आते हैं। सो दीज आर दी फॉरेस्ट। व्हाट आर दीज फॉरेस्ट कॉल्ड? Mangrove forest. यस, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ फॉरेस्ट, आई टोल्ड यू। ये ट्रीज जो होती हैं इनमें बहुत सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा जब भी वर्ड मैंग्रोव सुने। नंबर वन, दे ग्रो इन कोस्टल एरियाज, ठीक है, लो ऑक्सीजन है जहाँ सॉइल में। एंड नंबर टू बेटा, इनकी सॉल्ट टॉलरेट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज सी वाटर आता है बार बार, दिन में 2 बार, मैंने आपको बोला फ्लड आता है यहाँ इस एरिया में, तो इतना सारा सॉल्ट होता है सी वाटर में। बाकी कोई नॉर्मल प्लांट होगा तो वो डिके कर जाएगा, बट यहाँ पे इनके यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है सॉल्ट फिल्टर करने का, बहुत ही अच्छा। This is what we have a special advantage of these trees. They have a proper filtration system and बहुत ही harsh coastal conditions में ये grow कर जाते हैं these forests. Okay? So these are known as what? Mangrove forest. अच्छा, ये last question बताइए, इंडिया में कहीं है मैंग्रोव? इंडिया में कहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट है? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, यू विल फाइंड मैंग्रोव्स इफ यू हैव बीन देयर। तो वो सी के पास जो भी आपको ट्रीज दिख रहे होंगे छोटे मोटे जो भी हैं इस तरह के, दे आर एक्चुअली मैंग्रोव्स। हर वो प्लांट जो कोस्टल एरिया में मिलता है, जिसकी रूट सीधी ऊपर को ग्रो करती हैं, जो सॉल्ट को टॉलरेट कर लेता है, दिन भर फ्लडेड रहता है, ऑल दीज प्लांट्स आर नोन एज मैंग्रोव। एंड ये सारे मैंग्रोव ट्री से जो फॉरेस्ट बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फॉरेस्ट कॉल्ड एज? Mangrove Mangrove forest. forest. सो आई जस्ट टोल्ड यू, जल्दी बताइए, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, वेयर आर दे फाउंड? Andaman and And Nicobar. Andaman and Nicobar Islands. What are the two special characteristic features we did of mangroves? They grow in coastal areas where oxygen is less and have high Yeah. tendency to tolerate salt. Okay. So I'll give you 1 minute by the time I post my link in the other class. Revise, think about the 4 modifications of the root system that we. Okay, let me post the link. Yes, bache. Done? Let be. Yes, dear. I'm done with my work. I posted the link now. Now let me further continue. So, children, these are nematophores. नीचे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम है, सॉल्टेड वाटर है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए दे कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स. Is it okay? We are fine with all the 4 modifications. These are swollen roots. Food storage एक फंक्शन हो गया, prop root support है, stilt roots भी support है. अच्छा, stilt roots and prop roots में क्या डिफरेंस समझ में आया? दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, बताओ जल्दी से डिफरेंस बिटवीन stilt roots एंड prop roots. देख के बताइए, I'll show you properly. ये prop roots तो दिख ही गए होंगे, अब stilt roots भी देख लो. Ma'am, still roots come out from the nodes of the stem. Okay, very good. And what about prop roots? From the bark of the tree. Abhijay. Quite correct. Let me explain what your friend is saying. See, these are prop roots. They come out from horizontal branches. ये जो branches दिख रहे हैं बेटा ऊपर के, they are coming out from branches. Please see this figure. ये branches हैं. Okay, so they are coming out from branches. देखो, एक, and they grow which side? They grow vertically downwards. So दो चीजें याद रखनी है prop roots के बारे में. They come out from the branches and they grow
downwards, vertically downwards. Rather, the right word is vertically, बिल्कुल सीधा नीचे. Let me come to still roots. Your friend has already told you. They develop from the basal nodes. Main stem branches से नहीं. जो मेन स्टेम है उसके जो नीचे वाले नोड्स हैं उनसे ग्रो करते हैं बेटा. और ये स्ट्रेट ग्रो नहीं करते, ये ऑब्लिकली ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द सॉइल. ये देखिए ऑब्लिक. स्ट्रेट मतलब बिल्कुल नीचे ऐसे वर्टिकल नहीं जा रहे हैं, ऑब्लिकली ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ऐसे ग्रो कर रहे हैं. इसको देखिए बच्चा. गॉट द टू डिफरेंसेस. क्रॉप रूट्स ब्रांचेस से ओरिजिनेट होते हैं एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाते हैं. कोई आपको इधर उधर जाता नहीं दिखेगा. देखो सारे के सारे नीचे ग्रो कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स. एंड कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बेटा क्रॉप रूट्स? जल्दी बताइए क्या है ये? Branch. ब्रांचेस. 11th बायोलॉजी बच्चा प्लीज बोला करिए. एंड देन स्टिल रूट्स, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर मेन स्टेम. ब्रांचेस से कभी ओरिजिनेट नहीं होंगे. आपको अगर पहचानना पड़े तो बस ये देखो, अगर ब्रांचेस से ओरिजिनेट करके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स दे आर कमिंग, देन दे आर व्हिच रूट्स? Crop root. Top roots. एंड आप देखो ये कितने हाइट पे से भी ग्रो कर रहे हैं. हायर ब्रांचेस. हियर वी हैव ओनली इन द लोअर पार्ट्स, बस नीचे. एंड दे आर नॉट ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये साइडवर्ड्स भी ग्रो कर जाते हैं. दीज आर नोन एज स्टिल रूट्स. So we have done modifications of roots, 4 functions. Functions of root: absorption of water and minerals from the soil. They provide anchorage to the plants. Anchorage, you understand? They give support. Otherwise, if there's a strong wind or some storm, to plant, to it will fly. Storage of reserve food materials. Synthesis of plant growth regulators. You know now some hormones which help in the growth of the plant. Name Yes, them. ma'am. Yes, Peter. Name 2 phytohormones. We've done in class 10th. Rather, we have done 3. You just name 2. Syllabus delete हो गया था ना? Plant hormones also. Yes, ma'am. Why is it that whenever I ask something, that part is deleted only? What are phytohormones? Hormones found in plants. They are known as phytohormones. Auxins, gibberellins, cytokinins. These are what? Growth regulators. These are all hormones which are found in plants. We call them as growth regulators. So they are synthesized by the roots. Some of these plant hormones are produced in the roots. So root is done. Let's move on to stem. Stem is very nice. It is the ascending part of the axis. Ascending. ऊपर को जा रहा है, so we call it as axis. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. Like I told you, germinating seed से एक चीज नीचे निकलता है, which is known as radicle. ये देखिए radicle. Radicle हमारा root बना देता है. जो part ऊपर को grow कर रहा है ये वाला, this is your plumule. Plumule will grow straight ऊपर की तरफ and it will form your stems. So whenever you have a germinating seed, बेटा, एक चीज नीचे को निकलती है, ये वाला पार्ट नीचे को जा रहा है. दिस इज योर रेडिकल. ये जो ऊपर को टिप पे ग्रो करा ये वाला पार्ट, ये आपका प्लूम्यूल है. एंड प्लूम्यूल विल फॉर्म व्हाट वी कॉल एज द स्टेम. स्टेम पे क्या क्या होता है? इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, टर्मिनल बड्स, एक्सिलरी बड्स, नोड्स, इंटरनोड्स, सब कुछ तो इसी स्टेम के ऊपर है. आप देखिए, इट हैज गॉट ब्रांचेस, इट हैज गॉट लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर नॉट शोन. बड्स, एक्सिलरी बड, ये वाली कौन सी बड थी? सबसे ऊपर वाला Terminal bud. Apical Or bud. apical bud or terminal bud. What are nodes? Regions of the stem where leaves are born. These internodes, the portion between 2 nodes are known as internodes. If you see, the young stems are generally green, and later when the trees become old, तो उनका कलर कैसा हो जाता है बेटा? brown. Brown. Very good. They become brown. Functions of the stem: they help in spreading out the branches. They bear flowers, leaves, fruits. They conduct water and minerals and photosynthesis. See, whatever water and minerals are being absorbed by the root, who is going to pass it forward? The stem. And when it is green, जब छोटा है, young है, it can also perform. See, what are photosynthesis? Of course, you know about photosynthesis, but it conducts water, minerals, and photosynthesis. This is a word. Have you come across this word? कभी सुना है ये photosynthesis?
At least tell me yes or no. देखो बेटा, any substance which is prepared by photosynthesis, most common example I'm giving you is sugar, is known as a photosynthate. So what is this photosynthate? If you come across this word photosynthate, it means a substance which is produced by what? Photosynthesis. Photosynthesis. Supposing एक ऐसा plant है बेटा जिसकी leaves सिर्फ बीच में ही है, ऊपर leaves ही नहीं है. So leaves have prepared food, basically glucose, sugar, and then it has to be passed on. It has to be passed on where? To the upper parts also. So who's going to carry it? Obviously, stem लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा. So what is it carries water, it carries minerals, and it also carries, what is the word we just now did? Photosynthesis. Photosynthetes. Substances which are produced by photosynthesis, basically glucose, that is sugar, they're known as photosynthetes. Some cells also help in storing food, support protection and vegetative propagation. We'll come to this separately. देखिए फूड स्टोर हो रहा है ये क्या कौन सा वेजिटेबल है ये? Potato. Very good. These are tendrils. You must have seen pumpkins. These are pumpkins. These are tendrils. Soft stems, they need support. So we have these structures. These are called tendrils. These are what? These are modifications of the stem. Thorns. What are these? Thorns. ये देखो flat fleshy stem. Phylloclade. What is it called? चलो one by one I'll do. सबसे पहले ये देखते हैं food storage. Underground stems, they store food. Potato, ginger, turmeric, okay, zamikand in Hindi they've given you, and Colasia common. Is it okay, bacha? These all, what do? They store food. They also act as organs of perination to tide over conditions unfavorable for growth. What is perination? Yes, bache. Read the sentence. I'll only explain, but just read the sentence. They act as organs of what? Perination. Whenever the conditions are unfavorable, beta, supposing extreme winters हैं या extreme water का shortage हो जाता है, उस area उस time को हम perination period बोलते हैं plants के लिए. This period is known as the period of perination. Either there is extreme winters or there is an extreme shortage of water. So both the conditions में they help. These structures they help. Okay. Unfavorable conditions है, they already have food stored in them. So plant के लिए food shortage नहीं रहता है, food supply मिलता रहता है. In which times, which periods? Perination. Yes, perination periods. So they act, they help. So we also call them as organs of perination. These are tendrils, specially coiled structures. ये देखे होंगे आपने. They help the plants to climb. जितने भी आपके gourds हैं, cucumber, pumpkins, watermelon, grapevines, ये सब के सब में tendrils होते हैं. And tendrils क्यों होते हैं? Because stems बहुत ही weak होते हैं. Thorns, ये देखिए कितने बड़े बड़े thorns हैं. Pointed structures which develop from axillary buds. Everybody remembers axillary bud? Axil, angle पे grow करता है. देखिए बेटा, ये आपका stem, ये आपका leaf. तो ये आपका angle बनता है यहाँ पे. Axil बोलते हैं इस angle को. यहाँ पे जो grow करती है वो axillary bud होती है. और कभी कभी axillary bud से ये thorn like structures grow कर जाते हैं, which are known as thorns. They protect the plant from browsing animals. Those animals which come to eat these plants, so they protect them. Example is citrus and bougainvillea. Bougainvillea is a very, very common